think eventually subconsciously कहीं ना कहीं मुझे मेरे पापा की याद है. I think जिस तरीके से वो बात करते थे, he was a very passionate aggressive. मेरा शर्ट निकला, suddenly जब बॉबी सर आए और उन्होंने शर्ट निकाली, मैं उन्हें देखकर बोले लग गई है भाई. हमारी बॉडी को तो 5-5 बजे उठ के 5-5 बजे उठ के जिम खुलवाया जिम हमने। खुलवाया। तो वो होटल में जिम भी खोल रहे थे हमारे लिए हमने। हैं वैसे हमारे पिक्चर के एंड दिस फिल्म वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट अनिल सर. सो वी मिस यू अनिल सर. झकास. I think Sandeep as a director is someone who's unapologetically real because he's just like, this is my story and this So is, true. Huh? This is Vartika from Live Hindustan and I love the trailer. मतलब ट्रेलर देखने के बाद मेरे भी आंखों में आंसू आ गए. एंड मेरा सवाल रणवीर और बॉबी जी से है. हम लोगों को इतना एक्साइटमेंट है आप दोनों को देखने का. आप दोनों को साथ करने में काम करने में कितना मजा आया और कितनी एक्साइटमेंट थी? You know, when Sandeep ने मुझे कहा कि for the antagonist this part he's going to cast Bobby sir, मुझे याद है कि जब बरसात फिल्म रिलीज हो रही थी और जो भी बॉबी सर ने उस फिल्म के बाद जो भी किया, आई रिमेंबर व्हाटएवर ही यूज्ड टू डू ऑन स्क्रीन. अगर जो उनके वो ब्लू कलर के जो चश्मे थे, द वे ही यूज्ड टू वेयर हिज वाइट शर्ट एंड जीन्स, उनकी जो यूज्ड टू वेयर अ पर्टिकुलर डीजल ब्रांड, उनके जीन्स पहनते थे. मैं हमेशा जहाँ भी जाता था मैं लिखता था बॉबी सर ने ये पहना, तो मैं वो सेम चीज़ शॉपिंग करता था. सो आई हैव रियली ग्रोन अप वाचिंग हिम. We've met socially, but जब इनके साथ काम करने का मौका मिला, I think we both are very similar people. We both are, if I can say, very Punjabis. तो एक instant connection हुआ. I remember कि हम लंदन के -3, -4 डिग्रीज पे शर्टली शूट कर रहे थे for around 12 to 15 days. But there was so much warmth between us कि हमें ठंड ही नहीं लगी. So I think ये ऐसा रिश्ता है that I would really cherish for all my life. So thank you Sandeep sir for bringing us together, and thank you Bobby sir for being part of it. Love you, Ranbir. Hello, this is Seema Dhawan. बॉबी सर को भी बोलेगा. हाँ बॉबी मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैंने मतलब रवि मुझसे बहुत छोटा है, तो जब मैं कभी बाहर जाता था इतना भी छोटा नहीं है. लेकिन मुझे आज भी याद है, जब भी मैं कहीं गया हूँ कोई पार्टी पर या कहीं भी, तो मैं रणबीर से मिलता था. हमेशा बहुत प्यार से मिलता था, बहुत रिस्पेक्ट देता था. लेकिन मैं जब इसको हमेशा नोटिस करता था कि इसमें एक जो स्टाइल है, इसकी पर्सनालिटी है, और जब ये डांस फ्लोर पे जाता था, there was nobody better than him on the dance floor. And I still just think that one day when he comes on screen, he's going to really kill it. He's going to be the best. And I guess here I am working with Ranbir, my favorite actor, and it was wonderful working with him on the first day. We shot together in London, and it was just amazing. I mean, I'm telling you, I felt so overwhelmed working with him. It was just some of the most beautiful moments of my life, working with Sandeep, Pranay, Ranbir, and the whole unit. It was just the day when my shooting got over, I was like, I got up in the morning feeling sad. I said, "अरे shooting खत्म, अब मैं इनसे इतने हर दिन ऐसे नहीं मिल पाऊँगा." पर हमने at least spend किए वो 12-15 दिन साथ में, so I'm always going to cherish those moments with him. जबरदस्त मूवी रहने वाली है. ट्रेलर देखकर तो गूज़बम्प हो गया था. कमाल की फिल्म है कि यहाँ पे जो ये फिल्म का आप निकाल के लाए हैं ना, इसके अंदर जो मार धाड़ है बहुत ज़बरदस्त है और कहीं ना कहीं इमोशन को हिट करती है. तो संदीप सर के साथ जो आपने ये फिल्म की, तो आपको क्या नया एक्सपीरियंस मिला? आई थिंक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से इतने ओरिजिनल राइटर है, इतने ओरिजिनल डायरेक्टर है. इनका कोई भी मोमेंट, कोई भी सीन ऐसा आपने कभी लाइफ में कभी देखा नहीं है, कभी महसूस नहीं किया है. हम कितना बात करते थे सेट पे कि ये सब संदीप की पर्सनल लाइफ में ये सब हुआ होगा, बिकॉज ये कहाँ से लाता है ये सब आइडियाज. बट it's really been it's been too inspiring for artists like us to get a filmmaker like him. जो इनकी जो आवाज़ है, इनकी जो सोच है, इतनी ओरिजिनल है कि एक्टर्स हम मरते हैं कि ऐसे फिल्म पे काम करें, ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करें. सो बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है. Hi. थैंक यू. But do you believe this is till date perhaps your darkest, most intense character that you have played? And for you, how was the process of switching off sets while playing this?
I think darkness is, like I mentioned earlier, darkness is a very misused term, so I don't use the word dark. But yes, it's the most complex character I've ever played. People usually see me in a particular way as the boy next door, chocolate boy, romantic hero. I don't know what he saw in me that he, offered me this part. But इसने इतने रंग दिए इस character में, मुझे नहीं, हर character को. I think ऐसा writer है कि he writes for every character and he gives them a character. He gives them a plethora of emotions, of complexities, and that is very exciting to to portray. The switching off, switching on part was very important to me because when I was starting this film, I became a father. Raha was born, so I was going on set and doing all these things, and then going home and seeing my daughter. So it was a bit surreal. But when you're inspired, आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है. ये फिल्म हमने करीबन 100 दिन में खत्म कर ली थी, एंड आई थिंक बहुत जल्दी खत्म हुई है बिकॉज पता नहीं लगा कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ फिर. एंड दैट ओनली हैपेंस बिकॉज यू आर वर्किंग विद इंस्पायर्ड पीपल. संदीप इज डेफिनेटली ऑन टॉप ऑफ द लैडर where inspired people Hello, this is Seema Dhawan over here from Retro Pop Lifestyle Magazine. So my question is welcome to the entire team. My question is for Bhushan sir. How would you describe Animal? And Ranbir, what would you say about your character in it? See, it's a full commercial film with everything. You have music, you have performances, you have drama, you have action, everything what a person need to entertain themselves while watching a film. So it has everything in it. Basically adult rated Kabhi Khushi Kabhi Gum. That's a nice one. My character, ma'am, it's pretty now. The trailer's out, so you can see what he is. We would like to build some mystery around it. It's just 1 week to release. But I think if I had to describe this story in a line, it would be about a man who goes to any lengths to protect his family. That's what the core of this film is. वो टॉक्सिक वो सब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. मैं कुछ चेंज नहीं किया बिकॉज कबीर में प्रीति वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर या उससे ज़्यादा गीतांजलि इज इम्पॉर्टेंट तो कुछ चेंज नहीं हुआ एज इट इज कुछ फर्क नहीं पड़ा. Hi everybody. Hi. My question is for Ranbir and Bobby sir. बहुत अच्छा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है. फाइट सीन बहुत अच्छा है. बट अनिल कपूर सर ने कितनी हेल्प करी इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो जाने. वो हमारे ट्रेनर नहीं थे. बट वो खुद के एवरग्रीन स्टार है ना. ट्रांसफॉर्मेशन. एवरग्रीन स्टार. सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोल दूं कि मैं 1 साल से बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये जो एंड क्लाइमैक्स फाइट है बॉबी सर के साथ शर्ट निकालनी पड़ेगी. तो मैं और मेरे ट्रेनर लगे हुए हम लंदन पहुंचे, पंप कर रहे. पहला मेरा शर्ट निकला. सडनली जब बॉबी सर आया और उन्होंने शर्ट निकाली मैं और मेरे ट्रेनर बोले लग गए भाई. हमारी बॉडी कोई नहीं देखेगा. तो मेरे को इतनी टेंशन थी, मैंने इसको इतनी बड़ी बेयर बॉडी देखा. मैंने बोला यार रणबीर की बॉडी तो कमाल की है, अब कैसे यहाँ तक पहुँचूंगा, कहाँ पहुँचूंगा. लेकिन फिर मेहनत तो करनी पड़ी हम लोग. इतने पुश तो 5-5 बजे उठ के 5 बजे उठ के जिम खुलवाया. तो वो होटल में जिम नहीं खोल रहे थे हमारे लिए. हमें चीजें करनी पड़ी. अच्छा अनिल सर का सवाल है. आई थिंक ही सिंस 40 years have really pushed the क्या बोलते हैं, push the bar where fitness is concerned. If you see him today, he doesn't look like a year above 40 years old or 35 years old. मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि जो बॉन्ड हमें दिख रहा था, जो दिख रहा है ट्रेलर्स में, एक पापा था एक बेटे का, वो डैड एनिमल के जो पापा हैं वो मिसिंग है. वो क्यों प्रमोशंस का हिस्सा नहीं हो पा रहे? भूषण सर, अनिल सर का है. अनिल सर वो एक्चुअली दुबई में है. हमारा जो ट्रेलर लॉन्च था ये एक्चुअली 21 तारीख होने वाला था एंड आई थिंक इट गॉट डिलेड बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस. बट उनकी डेट्स दुबई में थी. बट वी मिस हिम क्योंकि वो इतने अहम हिस्से हमारे पिक्चर के.
And this film would not have been possible without Anil sir. So we miss you, Anil sir. Chakas! Okay, so sir, my question is, sir, we all know how famous the kind of violence Sandeep sir shows in his films. Okay, so I want to know personally from you, Ranbir sir, Rashmika ma'am, and Bobby sir, what kind of violence did you perceive from this movie? I think where violence is concerned, it's not really about action. You know, you hit someone and blood comes out because वो आप 10 seconds के बाद आप बोर हो जाओगे. I think violence is about the mind, what the human mind thinks, what the human mind is capable of doing. Where society is concerned, what is right, what is wrong, what is good, what is bad. Is Bobby sir the antagonist or I'm the antagonist? You know, who's the right person, who's the wrong person? So I think these are questions that as a society, as an audience, maybe they will start asking after this film. But where violence is concerned, I always believe it's not about dishum, you know, it's more about what goes on in the mind. Rashmika ma'am, please, आप बताइए. All I can say is that हम हर इंसान में एक बुरा होता है, अच्छा होता है, और हम अच्छे इंसान तब बनते हैं जब हम अपने बुरे को कंट्रोल करें. लेकिन ये कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि कभी कभी हमें ऐसी सिचुएशन में पड़ी रहती है कि वो हमारे अंदर का जो गुस्सा है वो आता है बाहर, सबके साथ होता है. जी. ये फिल्म में एक कहानी है परिवार की जहाँ पर ऐसे सिचुएशंस आते हैं, इसलिए आप मतलब देख रहे हैं प्रोमो में. So this is a part and parcel of life, and it's just trying to explain to society कि कोई भी अच्छा बुरा ऐसा हम डिसाइड नहीं कर सकते, किसी की रीजनिंग हमें पता नहीं है. So I guess that's what it's all about. Basically, when I watched Arjun Reddy or Kabir Singh, I didn't think it was a violent film, but I thought it was high on intensity. So even this film like Animal, you see a bit of violence where people are killing each other, or hitting each other and all of that. But if you see the emotion of the film, no, it's high on, like, it's high intense emotion that you don't really. I think Sandeep as a director is someone who is unapologetically real, because he's just like, this is my story and this So is, true. Huh? That's what I think. And I was like, because many a times when we were doing some scene, we were like, oh, but can you shoot it like this? Can you actually do it like this? And he was like, this is how I want my cinema to be. And it is so amazing because nobody else does that in cinema. Everyone sugarcoats everything that they want to see on cinema, and he doesn't do that. So I think that's something I appreciate him for. And I think he's a really smart director like that. And I think why there's so much conversation and why there's so much, you know, anticipation for the film is only because of that, because we are living people's lives which is so real to the core, and we have nothing to lie about those characters. Yes, ma'am. You know, so I think that's something I find absolutely amazing. Thank you ma'am, thank you. रणबीर, आपसे एक सवाल है. मैंने सावरिया से लेकर देखा लवर बॉय की इमेज, रॉकस्टार से देखा, अभी लास्ट दोनों फिल्में ब्रह्मास देखी. इस किरदार को लेकर आपका क्या, हर किरदार के लिए आर्टिस्ट का एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि हम ऐसे प्लेंगे, प्ले करेंगे, ऐसा मैनरिज्म होगा, वो इस किरदार के लिए आपका रेफरेंस पॉइंट है. आई थिंक मैं हमेशा जब संदीप से मिलता था, मैं हमेशा ये क्वेश्चन पूछता था कि संदीप मुझे एक रेफरेंस दे. मैंने कभी एक यू नो आई नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक, मुझे ये सब चीज़ें महसूस हुई नहीं. आई थिंक इवेंचुअली सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं मुझे मेरे पापा की याद है. आई थिंक जिस तरीके से वो बात करते थे, ही वाज अ वेरी पैशनेट अग्रेसिव मैन. So I try to